Om Shanti and hello. Welcome to the conversation on the occasion of International Day of Yoga. And the topic that we have today is Yoga for Total Well-Being. For this, we have Rajyogini Asha Didi and Sister Shivani. To give you a little introduction about Sister Asha, she has been practicing Raj Yoga for more than 60 years and has traveled worldwide teaching the ancient technique of Raj Yoga to people of all age groups and cultures, spreading peace and happiness. And we request Asha Didi to tell us more about the Brahma Kumaris organization. Om Shanti. Brahma Kumaris is a worldwide organization working for personal transformation in lives. It has its headquarters in Mount Abu, Rajasthan, and from there it is administering 8,700 centers all over the world. The organization was founded in the year 1937 by Dada Lekraj, who is now known as Prajapita Brahma. The organization is also a member of United Nations with consultative status in ECOSOC and UNICEF. No doubt, there are lots of improvements as far as the standard of living is there, but what is more important is improving the quality of life. The organization works in this field through Raj Yoga meditation because there are lots and lots of challenges that one faces nowadays. Lots of uncertainties, insecurities, and so on. But to face them, one needs to have inner power. And that inner power we get through practicing meditation. This Raj Yoga meditation is taught without any, without there being any fees or so. It is voluntary, and again, there is no fees charged. It is meant for all sorts of people, whether in professional life, personal life, or they are in their families. It is meant for people living in the families, in fact, so that one impression that people generally have, that it is only meant for those who are spinsters, those who are unmarried. It is not so. There are more than 9 lakh families which are associated with it, and they are working in their respective fields. We believe in Karma Yoga. As far as meditation is concerned, it helps one in making the quality of their working also better, efficiency, efficacy, and so on. Similarly, we believe that when the mind is good, mind is healthy, the body will automatically also be healthy. I would like to share that the organization has developed different wings for the service of the society, like for administration, for legal profession, women, children, youth, and so on. Just yesterday, we had one marathon from India Gate, and the fact that was emphasized was, if your thoughts are good, and the organization believes that if your thoughts are powerful, then automatically they will change your attitude towards the self and towards the society. Thoughts are very essential for the total well-being of a person. I would also like to share the organization rises above, its philosophy rises above all sorts of religions, caste, creed, nationalities, and so on. It is totally a spiritual organization. The administration system is through women, because women, they do have certain special leadership qualities through which
they're able to inspire people to transform themselves. So, this is a bit about the organization. Thank you, Sister Asha, for giving us that introduction. And now we have Sister Shivani. Sister Shivani has been practicing Raj Yoga meditation for over 20 years, and we have seen her on the popular TV series Awakening with Brahma Kumaris. And she's going to share with us her thoughts on yoga for total well being, and post which this conversation will be open for your questions. Sister Shivani, your thoughts on yoga for total well being. Om Shanti, and welcome to this Google Hangout organized by the Ayush Ministry. It is thanks to our respected Prime Minister that we have all united with one thought, that yoga is essential for our present lifestyle. जब भी हम सब मिलकर कोई एक चीज करते हैं और पूरा देश ही नहीं सारा विश्व इसमें अब मिला है और हम सब की एक ही थॉट है. And when everyone comes together with one thought, that one thought will definitely manifest into reality. Yoga means connection, union. जब भी हम किसी को याद करते हैं तो हम कहते हैं इस समय हमारा उनके साथ योग लगा हुआ है. We are in connection with that being. चेक करते हैं कि हमारा सारा दिन में किस किस के साथ कनेक्शन है. The minute we create a thought, that one thought first affects the way I feel. जैसी हमारी थॉट होगी हम उसी क्षण वैसा फील करेंगे. एक सिंपल थॉट हम लेते हैं कि आज मौसम कितना अच्छा है. एक थॉट क्रिएट किया और हम अच्छा फील करना शुरू करते हैं. And if I just create a thought, what lousy weather today, it's so depressing, I will start feeling low. तो मेरा सबसे पहला जो योग है, जो कनेक्शन है, वो है अपने आप के साथ. My every thought affects the way I feel. Second, my every thought radiates to my body. तो जैसी हमारी सोच होगी, वही एनर्जी, वही वाइब्रेशंस हमारे पूरे शरीर में उसकी वाइब्रेशन फैलेगी. And that's why medical science says today, my every thought affects every cell of the body. And which means हमारा जो शरीर है आज, जो हमारी सेहत है, the health that we have today is a manifestation of all our collective thoughts which we have created over a period of many years. अगर हमने बहुत बातें पकड़ के रखी हुई हैं, पास्ट की बातों को हम भुला नहीं पाते हैं, हम जल्दी हर्ट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हमारी एक एक सोच हमारे शरीर पर वाइब्रेशन डालती है और हमारी हेल्थ पर प्रभाव डालती है. तो जो हमारा सेकंड योग है वो है अपने शरीर के साथ. सो फर्स्ट इज आई दिस बीइंग विद माय सेल्फ. सेकंड, आई द बीइंग विद माय बॉडी. थर्ड, हम जो थॉट क्रिएट करते हैं वो हम जिसके लिए सोचते हैं, हमारी वो थॉट उन तक पहुंचती है, जिसको हम कहते हैं रिलेशनशिप्स. आज हम रिश्तों में इस बात का तो ध्यान रखते हैं कि हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, हम एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन कई बार हम ये ध्यान नहीं रखते कि हम सामने वाले के बारे में कैसा सोच रहे हैं. Let us remember that the minute we create a thought for someone, हमारा उनसे योग लग चुका है, and our thought will reach that other being, and वो रिश्ता उस thought के आधार पर बनता है. So the third connection is with people around us. And fourth, हम जो सोचते हैं वो वाइब्रेशन वातावरण में, प्रकृति में या कहीं यूनिवर्स में फैल जाता है. हमारी जो दुनिया है आज, हमारा जो विश्व है, it's a collective vibration of all our thoughts. So that is the power of our thought. It affects how I feel, it affects my health, it affects my relationship, and it's going to create the वातावरण, the atmosphere of this universe. अब अगर हम इन चारों ही पहलुओं को आज देखते हैं तो मन कई बार तनाव और उदास रहता है, शरीर में छोटी बड़ी बीमारियां हैं, रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट और गांठों को हमने आज नेचुरल कह लिया है,
और वातावरण तो हम कहते हैं पोल्यूटेड है। तो ये चारों ही जो हमारे योग हैं, ये क्यों हमारे हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है, क्योंकि एक पांचवा योग है जिसको हमने मिस किया है, और वो है उस परमात्मा के साथ योग, द सुप्रीम पावर, द कनेक्शन विद दैट हायर पावर, जिसको हम सब अलग अलग शब्दों से याद करते हैं। कोई परमात्मा कहे, कोई भगवान कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई गॉड कहे, लेकिन है तो वो हायर पावर, द ओशन ऑफ पीस, प्योरिटी, लव एंड हैप्पीनेस। उस पावर हाउस से क्योंकि हमारा कनेक्शन टूट जाता है, तो हमें वो शक्ति नहीं मिलती जिससे हम अपने ये सारे जो बाकी चारों योग हैं, इनको हम जैसा चाहें वैसा नहीं चला पाते। At the Brahma Kumaris, we learn Raj Yoga. Raj Yoga means I, the being, connected to that supreme power. और जब वो योग जुड़ता है, तो मेरा मन शांत, तो उसका प्रभाव मेरे शरीर पे, तो my body healthy, उसकी वाइब्रेशंस मेरे रिश्तों पे, तो मेरे रिश्ते प्यारे, इन हार्मनी, एंड वही वाइब्रेशंस जब सारे विश्व में फैलती हैं, तो ये दुनिया इस कलयुग से, इस दुख की दुनिया से एक बहुत प्यारी सतयुगी दुनिया बन सकती है। तो राजयोग इज आई द बीइंग connected with that supreme power, and when we establish that connection, then we are going to experience this total well-being, a life of health, happiness and purity. Thank you so much. Om Shanti. Thank you, Sister Shivani, for giving us that very brief but exact the topic that we are dealing of the topic that we are dealing of yoga for total well-being, and you emphasized on the value of our thoughts. And I'm sure there are many questions that we have. The first question that we have is from Hitendra Gautam. Hitendra, can you hear us? Yes. Please tell us about yourself and ask your question. Om Shanti. I am Hitendra Gautam from New Delhi. Today it's my privilege to be in direct talk with the spiritual guru, Sister Shivani ji and Asha ji. My question is, and more than the question, it's I want to increase my knowledge that what do we basically understand by total well-being, and how would yoga help me achieve this total well-being? Welcome Hitendra, and thank you for the beautiful question. जैसे अभी हमने देखा शुरू में, हर एक अपने जीवन में क्या चाहता है, what am I seeking in life? You just need to ask yourself, what are you seeking in life? So I think almost all of us will say we want happiness, we want health, we want a successful professional career, and we want beautiful relationships, and we want a wonderful world to live in. This is total well-being. We want everything beautiful and perfect within us and outside of us. तो जब हम योग करते हैं, we build a very beautiful connection with ourselves, and we build a very powerful connection with the supreme power. इससे ये होता है कि जो हमारी अपनी पर्सनल शक्तियां हैं, जैसे हम आज अपनी खुशी के लिए we are dependent on people, achievements, or on buying something, because somewhere since childhood we have been conditioned into believing that happiness comes when we get something, when we get good marks, or when we perform well. So that conditioning has not taught us how to create happiness within. And फिर जब परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती हैं, situations don't go our way, today it's become very easy for us to slip into a depressive state of mind. WHO says today that 1 out of 4 is experiencing depression in some way or the other. And it's a very dangerous statistics, because 1 out of 4 means almost 1 in every family. And by the year 2020, WHO says that depression can be the second cause of death after cardiac problem. So which means कि हमारी शक्ति जब कम हो जाएगी और हम अपनी खुशी और अपनी शांति के लिए बाहर डिपेंडेंट होंगे, and situations outside may not always be favorable, then there are big chances for us to slip into a depression, whether depression just as a mood
or depression as a chronic illness, which can also affect our physical illness. इसीलिए योग से, मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल जर्निंग से और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से हमारी खुशी बाहर डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि we understand, practice and then experience that happiness is all about creating the right thought and a powerfully positive pure thought in every situation. Situation may not be perfect, people's behavior may not be the way we want them to be, but when we have the power to respond the right way, then we will always experience stability and happiness, irrespective of situations and people outside, and which means our happiness and health will always be in our hand. It will never be dependent on external factors. उसके लिए अगर हम रोज 15-20 मिनट का समय निकालते हैं कि हम अपने आप से एक प्यारा रिश्ता जोड़ने के लिए और परमात्मा की शक्ति लेकर अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं, तो we are going to experience stability even in times of crisis and chaos. अब इसका सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ पर नहीं, लेकिन हमारी प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आज करियर में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं. हमारी मन की स्थिति अप एंड डाउन नहीं होगी, क्योंकि हमने अपने आप को शक्तिशाली बनाकर परिस्थितियों के प्रभाव से ऊपर उठाया है. So we will not fluctuate even if situations are not in our favor. लोग हमारे आसपास ऑफिस में हार्मनी में नहीं भी होंगे, कोई हमें नीचे खींचने की कोशिश करेगा, कोई आगे जाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाएगा, इसका प्रभाव हमारे मन की स्थिति पर नहीं पड़ेगा. तो हम अपने करियर पर फोकस होकर, आसपास की चीजों से अनअफेक्टेड होकर सीधा अपने गोल की तरफ चलते हुए सही मायने में जो सफलता हम अनुभव करना चाहते हैं, we will be able to experience that. So go just for 15-20 minutes. If it becomes a part of our routine or part of our lifestyle, we are very good soon going to see how it's going to affect every aspect of our life. And one thing is certain, anyone, especially youth, children, अगर आप योग को अपने जीवन में लाते हैं, you will never ever go towards any kind of abuse or addiction. आपको कभी भी किसी सब्सटेंस की जरूरत नहीं लगेगी खुशी या एक हाई एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि आपकी मन की स्थिति एक नेचुरल हाई में चलेगी. We will never go towards any dependencies and addiction, which is becoming a very big problem in current times. And that itself is a tremendous amount of willpower. कि आसपास कुछ भी हो, हम उसको succumb नहीं करेंगे. So my personal experience, yoga can affect all aspects of our life and give us total happiness. Thank you. Thank you, Sister Shivani, and thank you, Hitendra, for joining us. Thank you. We have another question coming from B. Venkateshwar Rao. B. Venkateshwar Rao, please ask your question. Om Shanti Asha Didi. Om Shanti Sister Shivani. I am Venkateshwar Rao from Delhi. It is my honor and privilege to have interaction with you. My question for Sister Shivani is, how would yoga help in managing my stress and tensions and give me happiness and peace in my day-to-day situations? Thank you, brother. बचपन से या शायद उससे भी बहुत पहले से हमारी जो बिलीफ सिस्टम या कंडीशनिंग बनी है वो ये कि जैसी परिस्थिति होगी वैसी हमारी मन की स्थिति होगी. And which means अगर लोग हमारे अनुसार होंगे, people are the way I want them to be, or if situations are the way I want them to be, then I will be happy. And if they are not the way I want them to be, then we always believe that feeling sad, getting angry, getting hurt is natural. And people around us would also say, हाँ naturally आपको गुस्सा आएगा, naturally बुरा लगेगा. तो हमने बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस को जैसे टेंशन, हर्ट, एंगर, इरिटेशन, इन सबको नेचुरल समझ लिया था. जैसे ही किसी चीज को हम नेचुरल समझते हैं,
उसको फील करना और उसको स्वभाव में लाना एक हमारे लिए आम बात हो जाती है, एक हैबिट बन जाती है। यहाँ तक कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे एंड एग्जाम होता नेक्स्ट डे, तो इवन पेरेंट्स वुड से कि तुम्हें टेंशन नहीं है, कल तुम्हारा एग्जाम है, which meant that if we are not tensed, then there is something which is wrong with us. You know, tension was supposed to be so natural. कि tension होनी चाहिए. So we've grown up believing that these negative emotions are natural. But spirituality and meditation teaches us कि ये वो आदतें हैं, या हम इसको संस्कार कहते हैं, personal habits. ये वो habits हमारी बन गई हैं जो हमें लगता है natural है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि वी आर सीइंग कि इसका जो प्रभाव हम पर पड़ रहा है, द इन्फ्लुएंस दैट इट इज हैविंग ऑन आवर लाइफ, ऑन आवर हेल्थ, ऑन आवर रिलेशनशिप्स इज नॉट राइट. इफ एनीथिंग वाज नेचुरल, then it would be healthy for me. And that's why each one of us is today saying कि I want 2 minutes of peace. I want कि कोई मेरे से 2 मिनट प्यार से बात करे, 2 मिनट मुझे शांति दे. We're looking for, searching for that 2 minutes of peace, love and happiness, because that is what is natural to every soul, natural for every human being. And जब हम अपने वो natural को experience नहीं करते, तो हम उसको बाहर ढूंढते हैं. आज हम खुशी को भी चीजों में ढूंढते हैं. We feel if we buy the next new mobile which is launched in the market, we will be happy. हम शांति ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं, संत महात्माओं के पास जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, सी शोर पे जाके बैठते हैं, सनराइज पे. We said we want few minutes of peace. हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं. प्यार हम लोगों से मांगते हैं कि आपसे मुझे प्यार मिलेगा. We get so many emails, we meet so many youth today who experience rejection in a relationship, or they have experienced a breakup in a relationship, and जो उनकी belief system है, they say I don't want to live anymore now after this. I cannot live without this person. क्योंकि वो feel करते हैं कि वो प्यार उनको उनसे मिल रहा था, और अगर प्यार किसी और से जिससे मिल रहा था वो नहीं मिलता, तो they feel I don't want to live anymore. This is a life of dependency, जहाँ हम अपनी original nature को बाहर ढूंढ रहे हैं, लोगों से मांग रहे हैं, और आज तो मांगने पर भी नहीं मिलता, तो हम बहुत रिजेक्टेड फील करते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, और हम बहुत खालीपन एक्सपीरियंस करते हैं. We meet lot of people who've achieved so much in life. They have almost everything they ever wanted, but वो एक ही चीज कहते हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम अंदर खाली है. वो अंदर खाली क्या है वो भी नहीं पता होता कि क्या है वो चीज, वो जो खाली है, क्योंकि वो सब कुछ अचीव करने के प्रोसेस में काम करना है, कमाना है, लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग एंड अचीविंग we let stress, anger, irritation be a natural part of our life, and इसीलिए हम अपनी शक्ति को गवाते गए, धन को कमाते गए. We were earning money, but we were losing inner power, and so we reached a stage where we are very wealthy, but inner power खाली है. योग हमें सिखाता है कि अपनी inner power को बढ़ाते जाएं और साथ में बाहर कमाते जाएं, which means work hard, excel professionally, but without using anger and stress, and which means conserve your peace and happiness, use it in every karma, and then move ahead. तो जब हम रोज सुबह 15-20 मिनट मेडिटेशन में बैठते हैं, अपने मन की तैयारी करते हैं कि how am I going to be today the whole day. Normally we have a diary of what am I going to do today the whole day. But spirituality prepares us to prepare कि how am I going to be today the whole day. And then we choose one thought for the day. Let's say all of us choose a thought tomorrow that I'm going to be a peaceful soul. पूरा दिन I am a peaceful being. बातें आएंगी, बहुत कुछ होगा, हमें रिस्पॉन्ड भी करना है, लेकिन a peaceful being only in a peaceful way. एक दिन ध्यान रखने से भी हम शाम को देखेंगे हमारी बहुत बहुत सारी शक्ति तो ऐसे ही नष्ट हो जाती थी, वो बच जाएगी, and we'll feel lighter, happier and healthier. So let's start experimenting with this, a new belief system.
ये सारी जो नेगेटिव इमोशंस हैं ये नेचुरल नहीं, ये एक बीमारी है। एंड नेचुरल है हैप्पीनेस, प्योरिटी, peace, love and power, and start using it in every karma of life. And let's see, just do it for one day. आपको एक दिन में पता चलेगा कि आपको कितना रिजल्ट मिलता है। थैंक यू सिस्टर शिवानी, आपने बहुत सुंदर स्ट्रेस और टेंशन को दूर रखने का तरीका बताया। And we have another question, and that is from Dr. Zar Nigar. Dr. Zar Nigar, are you ready with your question? Yes. Please ask your question. Good evening, Sister Asha. Good evening, Sister Shivani. I am Dr. Danita from Bangalore. My question is, how would yoga help to prevent the increasing incidence of suicide? Thank you, sister. Very relevant question. आज हम अखबार रोज उठाते हैं तो हर रोज हमें कई इंसिडेंट्स ऑफ सुसाइड या अटेम्प्ट टू सुसाइड ये मिलते हैं। तो मन एक प्रश्न अपने आप से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ होगा इस व्यक्ति के जीवन में कि इसने पूरी तरह से अपने ऊपर गिव अप कर दिया। एंड जिनके बारे में हम पढ़ते हैं वो कोई वो लोग नहीं हैं जो जीवन में हार चुके हैं, वो लोग होते हैं कई बार जो अपने जीवन में बहुत सफलता की सीढ़ी पर हैं। कोई किसी कंपनी के सीईओ है, कोई एक्टर है, सेलिब्रिटी है। They are people whom we look up to and we say they are successful people in society. तो फिर इनके जीवन में ऐसा क्या हुआ होगा कि they have attempted or they have succumbed to that. तो इसको हमें सब कुछ समझना होगा, क्योंकि कई बार हम में से कईयों के अंदर ये थॉट आ जाता है कि I don't want to live anymore. And suicide is not something which happens because of one incident. Suicide is because of a low phase of a state of mind for a very, very long time, not treated. Sometimes it could be a depression not treated, or sometimes it could be एक उदासी, एक दर्द जो बहुत महीनों से या कई बार सालों से accumulated है, और उससे आत्मा की शक्ति इतनी कम हो जाती है कि फिर उसमें अगर किसी के सामने कोई परिस्थिति आ जाती है, a little bigger situation, उसके पास उसको फेस करने की ताकत नहीं होती। Let's say for example, I have hurt my foot. अब उस चोट के साथ I can walk. तो मुझे लगता है कि क्या फर्क पड़ रहा है, मैं चल सकती हूँ ना आराम से। तो उस चोट के साथ ही मैं चलना सीख लेती हूँ। And I can walk with a limp for many, many years. Because my normal life is going on. तो मैं थोड़े से दर्द के साथ भी जीवन जीना सीख लेती हूँ। लेकिन अगर एक दिन परिस्थिति आए जिसमें मुझे भागना पड़ेगा, I will not be able to run and I will fall. तो हमें कभी भी दर्द के साथ जीना नहीं सीखना। We don't have to adapt ourselves to pain and think कि कोई बात नहीं ना, जीवन तो चल रहा है, करना क्या है, रोज ऑफिस जाना है, घर संभालना है, सब हो रहा है। उदासी तो it's natural, मेरे साथ हुआ ही ऐसा। Let us never accept pain as natural and hold on to it. क्योंकि अगर दर्द को पकड़कर हमने जीवन में रखा, हमें ये नहीं मालूम कौन सी आने वाली परिस्थिति हमारे लिए फेस करने के लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। So suicide does not happen because of one incident. It happens because of a little emotionally weak mind over a very long period of time. And this is a warning signal for all of us. जब हम किसी के बारे में पढ़ते हैं तो सुनते हैं, हम अपनी चेकिंग नहीं करते। कई बार हम लगता है ये तो उनके जीवन की बात है। It can happen to any of us. It is something, it's only a thought. And जब वो thought किसी पर हावी हो जाती है और उस क्षण उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं होता है, something like this happens. So this is a warning for all of us. Let us not live with pain and let us not live with an emotionally weak mind. हमें healthy सिर्फ physically नहीं, इमोशनली और मेंटली हेल्दी होना है, जिसके लिए हमें स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। तो जब हम रोज ज्ञान सुनते हैं और मेडिटेशन करते हैं, हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है। हमारे लिए लोगों को फॉरगिव करना, पुरानी बातों को लेट गो करना, बीते हुई पास्ट की बातें जो हमने पकड़ के रखी हैं,
उनको छोड़ देना, क्योंकि समझ में आ जाता है और ताकत भी आती है, वो करना बहुत इजी होता है। और जब वो करना नेचुरल होने लगता है, हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। जो रोज ये करेगा, वो कभी भी उसके मन में ऐसी थॉट भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो दर्द में जीवन नहीं जी रहा, और जो दर्द में नहीं जी रहा वो कभी भी सुसाइड के बारे में नहीं सोचेगा। So if all of us integrate yoga into our life, then this is something we can eradicate completely from our society and humanity. That's definite. Nobody will ever think of it. Thank you. And we have another question from Dr. Shiva. Dr. Shiva, are you ready with your question? Can you hear us? He's introducing. I think you have to unmute yourself. Dr. Shiva, are you ready with your question? Yeah. Can we ask, there is another caller that we have, Priya. Can you hear us, Priya? Are you ready with your question? And Yes, please, yeah. Please ask your question. Good evening, Sister Shivani and Sister Asha. There's a question, because you are Raj Yoga practitioners, as we know. What exactly and how would you explain that Raj Yoga meditation is, and how is it possible in this busy life that we can take out time to do it? Thank you, Priya. Raj Yoga, as the name itself implies, Raj Yoga, the highest yoga, and a yoga by which we can become a ruler of our own self. आज अगर हम देखते हैं, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, अपने ऊपर संयम नहीं है। कई बार हमारे मुंह से ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं which many of us then need to apologize to the other person, and then we say, I'm really sorry, I didn't mean to say this, it was just a slip of the tongue. When we say slip of the tongue, it means I do not have control over my words. आजकल तो कई बार हाथ भी उठ जाता है. We hear so many incidents of road rage. We see incidents where just for a small argument or conflict, people are doing murders on the road just because of one argument, because उस समय उनके हाथ में weapon है, hand goes out of control. And this all happened because the mind was not in our control. तो राजयोग मतलब जिससे हमारा अपने ऊपर राज्य होगा, अपनी सेंस ऑर्गन्स पे, अपने माइंड और इंटेलेक्ट पर राज्य होगा. दैट इज राजयोग. राजयोग मीन्स अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, हु एम आई. क्योंकि हमारी सारी नेगेटिव इमोशंस का जो फाउंडेशन है वो है ईगो, अहंकार. एंड ईगो इज कमिंग बिकॉज आई डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ हु आई एम and who is the other person. We connect with each other only on the basis of all that we have acquired. हमारी position, हमारा status, हमारी wealth, हमारे रिश्ते. लेकिन राजयोग हमें सिखाता है कि I am a being, a soul, talking to another soul. तो अहंकार of position, status, knowledge, wealth ये बीच में नहीं आता. और जहाँ अहंकार नहीं आता, वहाँ purity अपने आप आ जाती है. So Rajयोग means knowing myself. Second, when I come to know about myself, then I come to know that my original nature is purity, bliss, love, happiness and peace. And so I stop looking for these things outside and start using them from my inner self. And second and most important is knowing the supreme power. हम सब भगवान को याद करते हैं, चाहे हम हफ्ते में एक दिन करते हैं, चाहे हम रोज कर रहे हैं, कभी हम एग्जाम के दिन, प्रॉब्लम के दिन कर रहे हैं, कभी हम शुक्रिया करने के लिए कर रहे हैं. लेकिन आज हम सबको अपने आप से पूछना है कि जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कर रहे हैं, मतलब मुख बोल रहा है, हाथ कर रहा है, घंटी बजा रहे हैं, लेकिन हमारा मन कई बार दूसरी जगह गया है. हमारा मन ऑफिस पे है, कोई बात कारोबार की है, हमारे मन पर चल रही है. तो हमारा योग परमात्मा से नहीं जुड़ा हुआ है. परमात्मा कौन है उसको जानना
and फिर उसके साथ connection जोड़ना, and which means developing a very personal relationship with the Supreme Power, a relationship in which everything that is His, and what is His is He is the ocean of purity, power, and happiness. Connecting to Him and channelizing His energies into myself, that is Raj Yoga. And like you said कि we are very busy, तो हमारे पास टाइम नहीं है सारा दिन में ये करने के लिए, लेकिन कई बार सोचना चाहिए कि हम बिजी क्यों हैं। हम बिजी इसलिए हैं क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हमें हर काम करने में जितना समय लगना चाहिए उससे ज़्यादा लगता है, बिकॉज वी आर ओवर थिंकिंग। इट्स लाइक सेइंग कि मुझे बहुत लंबे रास्ते जाना है लेकिन मेरे पास रुककर गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए टाइम नहीं है। It's like saying I need to use my mobile the whole day, but I don't have time to charge it. We all give half an hour to charge our phone. Why? Because we have the knowledge कि हमें सारा दिन ये मोबाइल यूज अगर करना है तो हमें इसको आधा घंटा तो चार्ज करना ही होगा। हम अपने शरीर को चार्ज करने के लिए भी टाइम देते हैं, हम खाना खाते हैं, सोते हैं। हम कितने दिन चलेंगे विदाउट फूड एंड स्लीप? We have to take our time, because if I don't take our time, I know कि ये शरीर ज़्यादा समय नहीं चल पाएगा ठीक से। तो अगर शरीर की चार्जिंग होती है, गैजेट्स की चार्जिंग होती है, क्या हमारी चार्जिंग नहीं होनी चाहिए? और क्योंकि हम अपनी चार्जिंग करे बिना अपने आप को आज चला रहे हैं, हम एक थकी हुई डिस्चार्ज स्थिति में चलते जा रहे हैं। सुबह उठकर सिर्फ कल चेक करना कि जितने समय का आप अलार्म लगाते हो, जब आपका अलार्म बजता है, do you wake up fresh or do you feel like sleeping 5 minutes more? After 6 hours of sleep, wanting to sleep 5 minutes more means we are tired, we are fatigued. हमारा शरीर सोया था 6 घंटे, लेकिन मन तो रात को भी चल रहा था, क्योंकि सारा दिन वो इतना चलता है, रात को भी वो उसी स्पीड पे चलता है। Mind is not getting rest, mind is not getting charged. जब ये हमारी प्रायोरिटी पे आ जाएगा, 15-20 मिनट सुबह निकालना आपको कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको वो 20 मिनट्स जो आप सुबह निकालेंगे, आपको उसका रिजल्ट सारा दिन पे दिखेगा। आज हम सबके पास एक डायरी है कि हमें सारा दिन में क्या क्या करना है, लेकिन एक सिचुएशन से अगर मन अपसेट हो गया, हमारी पूरी डायरी, पूरा शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाएगा। We will not be giving the right energy into the next situation because emotionally we are disturbed. 20 minutes in the morning is like compulsory we have to give to ourselves. शुरू में हम compulsory करेंगे, 15-20 दिन में हमें उसका benefit दिखेगा, and then हमें compulsory करना नहीं पड़ेगा, हम उसको करे बिना रह नहीं पाएंगे, because we will see the benefit of it in our life. And जो राजयोग हम सीखते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, वो इतना सिंपल है कि अगर आपको सुबह न भी टाइम मिले, आप सिर्फ बस में बैठे हैं वहां कर सकते हैं, मेट्रो में बैठे हैं कर सकते हैं, अपनी कार में बैठे हैं वहां कर सकते हैं। आप सारा दिन में 1-2 घंटे के बाद 1-2 मिनट के लिए कर सकते हैं। इट इज दैट सिंपल। तो बहुत सिंपल है। ये बैरियर अपने आप को देखे कि हमारे पास टाइम नहीं है। Don't stop yourself from a life of health and happiness. Just like you charge everything else, take out 20 minutes for yourself. That's all you require to experience a beautiful life. Thank you, Sister Shivani. And we have another question in line from, again, we go to Dr. Shiva. Dr. Shiva, are you ready this time? Okay, so I think we will move on, and we have Ms. Najib Jahan. Najib Jahan, can you hear us? Please ask. Yes, yes. Please ask your question. A very good afternoon to Sister Aisha and Sister Shivani ji. I am Najib Jahan from Bangalore. My question is, Brahma Kumari is basically known as spiritual value-based education. Can you please highlight on spiritual value-based education? Thank you, sister. When we talk about education, education means to bring out what is inside, to bring it out.
So spirituality teaches us that the original values, the original qualities of every soul is purity, love, peace, happiness, bliss, and power. This is the value of every soul. This is the original sanskar of every soul. It's like this white color sari that we are wearing. The soul is beautiful white like this. It's flawless. It's perfect. लेकिन जैसे इस साड़ी को अगर हम पूरा दिन पहन के रखें तो सारा दिन में ये थोड़ी सी मैली हो जाएगी, इस पर कुछ दाग लग जाएंगे, हर एक की साड़ी पर अलग अलग दाग लगेंगे, लेकिन हर एक की साड़ी ओरिजिनली वाइट है, प्योर है। इसी तरह हम अपने आप को और एक दूसरे को देखें, अगर एवरी सोल इज प्योर, लेकिन लॉन्ग जर्नी, very long journey of many years, many situations, many belief systems, तो हमारे ऊपर छोटे छोटे दाग लग जाते हैं। किसी पर हर्ट का दाग लगता है, किसी पर जेलसी का दाग लग जाता है, किसी पर इरिटेट होने का दाग लग जाता है, किसी पर रिजेक्टेड फील होने का दाग लग जाता है। दिस इज नॉट आवर नेचर। आज हम इसको अपनी नेचर समझ लेते हैं। We say this is my nature. Spirituality says this is not my nature. This is an acquired stain. ये ऊपर से लगा दाग है। This is education. This is an education which I did not have before. I thought it was my nature to get angry or to shout or to get irritated. And spirituality gave me this education कि this is not my nature. ये दाग है और ये दाग तो साफ हो सकता है, और जो ओरिजिनल कलर है वो ऊपर बाहर निकल कर आएगा। So this is what we learn at the Brahma Kumaris. This is what Raj Yoga meditation teaches us and helps us to experience that. And ये हम सबका अनुभव है कि जब हम इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो हमारे जो संस्कार थे पहले, जिनको हमने सोचा था कि ये आदतें कभी चेंज नहीं होंगी हमारी, ये तो हमारी सिस्टम है, ये नहीं चेंज हो सकता कभी भी, वो आदतें कब बदल गई वो भी हमें पता नहीं। इट हैपेंड इन सच अ ग्रेजुअल एंड नेचुरल वे कि पता भी नहीं चला। और जबकि आज हम लोगों से देखते हैं, मिलते हैं कि अगर उनको कोई बीमारी है और उनको कहा जाए कि आपको मीठा नहीं खाना या सिगरेट नहीं पीनी, इवन उसके लिए लोग आज बहुत इजीली कह सकते हैं कि नहीं, ये तो मेरी आदत है, ये छूट नहीं सकती। This is wrong information that they have got about themselves. That means lack of education. ज्ञान की कमी है। हम किसी भी आदत के लिए नहीं कह सकते कि ये आदत चेंज नहीं हो सकती है। तो जब हम ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो खाने पीने की आदतें, ये सब्सटेंसेस जो हम लेते थे पहले, इसकी आदतें, ये तो बहुत जल्दी पहले 15 दिन में ही छूट जाती है मेडिटेशन करने से। लेकिन सटल हैबिट्स, and which means habits of the way of thinking, speaking, behaving, इतनी subtle which we thought was our personality, उसमें भी हम जो change लाना चाहें वो ला सकते हैं। and जब change हमारे अंदर आता है, हमारी vibrations औरों को पहुंचती हैं, it helps other people also to emerge their originality. जब हम ईगो से, अहंकार से औरों से व्यवहार करेंगे तो उनका भी ईगो इमर्ज होगा। लेकिन हम प्योर कॉन्शियसनेस से औरों के साथ व्यवहार करेंगे तो सामने वाला भी ओरिजिनली तो प्योर है, तो उनके भी प्योरिटी इमर्ज होगी। सो व्हेन वी एजुकेट आवरसेल्फ, it automatically helps to educate other people. We don't need to educate with words. It will just happen with vibrations. And so we learn at the Brahma Kumaris that when we change, the world automatically starts changing for us. And these values which we start experiencing, जिसके बारे में हम सिर्फ सुनते और पढ़ते थे पहले, लेकिन जब जीवन में हम अनुभव करना शुरू करते हैं तो फिर वो हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में, हर जगह आना शुरू हो जाता है। So that is what we learn at the Brahma Kumaris. Thank you, Sister Shivani. And we have a stream of questions coming online. We are going to take a few of them. The first question that we are taking up, he is Rahul, and he says that we are constantly living in a negative environment of fear and insecurity, be it at home or workplace. How can we use Raj Yoga to overcome this? We have started living with this belief system
कि as will be the environment, so will be my inner experience. And which means जैसी परिस्थिति होगी उस परिस्थिति से हमारी मन की स्थिति बनेगी. जब environment negative है तो we tell ourselves कि negative feel करना, insecure feel करना या उदास feel करना तो natural है क्योंकि environment negative है. Spirituality teaches us who created the environment. It is we who are creators of the environment. आज society जो है, it is collective consciousness of all of us. It's like suppose you are in a class in school or in the office. अगर आपकी क्लास में 50 लोग हैं, 50 people, then just take 50 minds and उन 50 minds को जोड़ देते हैं अगर आप, तो एक जो पूरा एक mind बनता है, that is the mind of your classroom. That means that's the environment of your classroom. Who created that environment of the classroom? Those 50 minds who are sitting in that classroom. Similarly, हम अगर एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाते हैं तो हम कहते हैं environment कितना peaceful है, कितना pure है. लेकिन उस जगह का environment भी किसने बनाया? हम सब ने बनाया. क्योंकि जब हम उस environment में जाते हैं, we create very pure thoughts over there. And क्योंकि हम सबकी thoughts ऐसी जगह पर pure होती है, हमारा environment pure हो जाता है. So let's get the equation very right. It's not the environment which will create our state of mind. It is our state of mind which will create the environment. So let's not live our life like a victim, thinking कि environment negative है, तो हमें negative होना ही है या हो ही जाएंगे. Let's take it up as a responsibility कि अगर environment negative है, तो हम उस negative environment को purify करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? And always remember this, that our state of mind is separate from the environment. It's possible that you can be in a very chaotic environment and be very, very peaceful. And it's also possible for somebody to be in a temple and yet be very, very angry or upset inside. The state of mind is very separate from the environment. तो अपने मन की स्थिति पर focus on your state of mind, use spiritual power, take out 15 minutes for yourself daily and take charge of only one responsibility of your state of being, the mind, irrespective कि वातावरण कैसा है. And you will become an instrument to creating a pure and positive environment. Just take care of yourself and you're making a very big contribution towards creating a peaceful world. Thank you, Sister Shivani, for that answer. We have another question from Anuradha, and she says that how can I connect with the Supreme when I have a weak mind which is full of waste thoughts and cannot concentrate? That's a very sweet question, Anuradha. How can I connect with the Supreme if I have a weak mind? Do you know why I connect to the Supreme? Only because I have a weak mind. If I become very powerful, I might not need the powerhouse. When do we connect the phone to the powerhouse? When it's discharged. We don't connect it when it is charged. हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हम बीमार हैं. हम ठीक हो जाएंगे तो हमें डॉक्टर के पास तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हमें लगता है कि मेडिटेशन बहुत डिफिकल्ट है. हमें जैसे कि थॉटलेसनेस एक्सपीरियंस करनी है, कोई सोच हमारे माइंड में नहीं आनी चाहिए. And we find it's difficult because we're thinking too much. Rajyoga meditation doesn't mean we stop thinking. It doesn't mean our mind has to become blank. Rajyoga meditation just means we develop a very pure and beautiful and most important, a personal relationship with the Supreme Power. जैसे आपका इतने सारे और लोगों के साथ रिश्ता है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वो रिश्ता है, ऐसे ही एक रिश्ता और. It's going to be like any other relationship. The only difference is that in this relationship, you will get unconditional love, unconditional acceptance, and unlimited power. And जब वो मिलता है एक रिश्ते में, तो हमारे बाकी सारे रिश्ते बहुत अच्छे होने लग जाते हैं. So don't think that meditation is something difficult and जब हम strong हो जाएंगे तभी हम meditation करेंगे. हमें meditation की अभी ज़रूरत है. Just take out some time
and come over to any of the Brahma Kumari centers which is close by to you. As Sister Asha explained to us, we have almost 9,000 centers all over the country, and which means wherever we are living, wherever, whichever city, town, and even villages, we would have a center within 3 to 4 kilometers of where we are. इतने सारे सेंटर खुले हैं और हर सेंटर पर बहनें हैं हमें मेडिटेशन सिखाने के लिए. At every center of the Brahma Kumaris, we have a 7 days Rajyog meditation course. It's of 1 hour every day, and which means 7 days, 1 hour daily, 7 घंटे. जो दिन, जो टाइम आपको सूट करता है, आपको सेंटर पर आना है, वहाँ पर बहनें आपको मेडिटेशन सिखाती हैं, एंड जैसे दीदी ने बताया, एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरी एज ग्रुप. बच्चे भी जा सकते हैं, एंड ये योग है जो हम बैठे बैठे लेते हुए भी कर सकते हैं. तो अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है या हमारी एज ज़्यादा है, हम तो भी उस मेडिटेशन को कर सकते हैं. थोड़ा सा समय निकाल कर सेंटर पर आए. आपको बहनें 1-on-1 अकेले 1-on-1 बिठाकर आपको ये मेडिटेशन सिखाएंगे, and you will experience that it's the most simplest thing you've ever done. Just take out that 1 hour time for yourself and come over to any of the centers near you. The sisters are always there for you to teach you how to meditate. And thank you, Sister Shivani. And we have the last question of this hangout from Yogesh, and he says, what are the contribution of the Brahma Kumaris organization and Raj Yoga in the celebration of International Day of Yoga? जैसे आशा दीदी ने हमें बताया कि Brahma Kumaris has been expounding and taking the message of Raj Yoga meditation all over the world since 1936. So it's thanks to our Prime Minister that the awareness has been created all over the world, especially in our country. But Brahma Kumaris as an organization has been working on it for almost 80 years now. And with its headquarters at Mount Abu and 9,000 centers spread in 135 countries, we have been taking this message and practice of Raj Yoga to people all over the world, irrespective of religion, caste, nationality. छोटे बच्चे, सीनियर सिटीजन्स सब मिलकर राजयोग करते हैं. हमारे इतने सारे जो सेंटर्स हैं वहाँ आज 10 लाख से ऊपर परिवार आते हैं. हम लोग रोज सुबह 4 बजे हमारा टाइम है, तो हम सुबह सब लोग मेडिटेशन करते हैं. एवरी डे वी प्रैक्टिस मेडिटेशन, चाहे वो घर पे है, हम सुबह 4 से 5 मेडिटेशन करते हैं. Then we come to the center at 7 a.m. We have a collective study class. उसके बाद हम मेडिटेशन करते हैं. एंड इवनिंग 6:30 to 7:30 हम मेडिटेशन करते हैं फॉर रेडिएटिंग प्योर वाइब्रेशंस टू द वर्ल्ड. एंड हमारा हर थर्ड संडे वर्ल्ड मेडिटेशन डे होता है, जहां हम जहां भी हैं पूरी दुनिया में हम सब इकट्ठे होकर मेडिटेशन करते हैं कि कलेक्टिव वाइब्रेशंस फॉर क्रिएटिंग पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड is something that the Brahma Kumaris have been doing for so many years through all its centers. हम इस मेडिटेशन को स्कूल में, कॉर्पोरेट हाउसेस में, अपने रिट्रीट सेंटर्स पर सिखाते हैं. And specifically for this International Day of Yoga, yesterday we had a very beautiful youth peace walk for harmony and unity at the India Gate. This morning at 5:30 a.m. we were all at the Red Fort. There were almost 40,000 brothers and sisters of the Brahma Kumaris who gathered at 5:30 a.m. this morning at Red Fort, and we had collective meditation because we firmly believe कि एक होता है हम अकेले बैठकर अपने घर पे करें, उसकी पावर है, लेकिन जब हम इतनी संख्या में इकट्ठे होकर मेडिटेशन करते हैं, the collective power can create miracles. And tomorrow evening we have a program at City Fort Auditorium. On topic is again yoga for a healthy lifestyle. So this is specific events to this International Yoga Day, but for us yoga is a lifestyle, and we don't say 20 minutes of meditation, we say Raj Yoga meditation is our lifestyle. In the way we think, speak, behave, eat, live, sleep, everything is a yogi lifestyle. तो घर गृहस्थ में रहते हुए, अपना प्रोफेशन बिजनेस करते हुए, लेकिन योगी जीवन जीना, ये राजयोग मेडिटेशन हमें सिखाता है.
Thank you. And with this, we come to the end of the conversation. And we hope that it was helpful and will allow us to create a life of total well being through yoga. Thank you, Sister Shivani. Thank you, Sister Asha. And thank you, all of you, for asking questions. Om Shanti.